Hello everyone, welcome to my new session about ecosystem class, chapter number 12 of class 12th. I am Dibyaranjan Parida. I am pursuing my second year MBPS in AIIMS Bhubaneswar right now. So today our topic of discussion is ecosystem. So ecosystem corner. An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature. So the first ecosystem corner, ecosystem nature of a functional unit where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. जोटिकी लिविंग एनवायरनमेंट माने निज भितर इंटरैक्ट करंती आ फिजिकल एनवायरनमेंट संगे इंटरैक्ट करंती ecosystem varies greatly in size from small pond to a large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. Entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all local ecosystem on Earth. Since the system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into basic categories, namely the terrestrial and aquatic. Terrestrial माने स्थल भूमि उपरे, aquatic माने पानी भितरे. तो terrestrial माने कौन लैंड उपरे, aquatic माने वाटर बॉडीज रे. Forest, grassland, desert, and are some examples of terrestrial ecosystems. Pond, lake, wetland, river, estuary are some examples of aquatic ecosystem. Crop field, crop fields and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem. Crop field एरिया में चाष बास हुए और एक्वेरियम जो पानी रे माछ रखती may also be considered as a man-made ecosystem. We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input by the productivity, transfer of energy, food chain, web, nutrient cycle, and the output by degradation and energy loss. We will also look at the relationships like cycles, chains, webs that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationships. तो हमें ये चैप्टर कौन देखा ना इकोसिस्टम और वेरियस various aspects ଯେମିତି ତାର input productivity transfer of energy যেটা କି food chain food web nutrient cycling ଆଉ output ଯେମିତି degradation ଆଉ energy loss ବିଷୟରେ ପଢିବା ecosystem ecosystem structure and function. In earlier classes we have looked at various components of environment abiotic and biotic. Abiotic माने जेड़ा temperature land soil एड़ा सब abiotic. Abiotic होचे एति सब living organisms रहिले. You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding. Let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of ecosystem. Interaction of abiotic and biotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. The interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is a characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant. Identification and enumeration of plant animal species of an ecosystem gives its species composition. Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. Vertical stratification कौन ना vertical distribution of different species occupying different level माने ऊपर गोटे जगह रे ऊपर जो जदि हम देखिबा सेत जो एग्जांपल भी एटी लिखि जे trees occupies the top vertical strata or layer of forest, shrubs at the second, herbs, grasses occupy the bottom layer. माने गोटे जगह रे vertical माने ऊपर जो जदि हम distribution देखिबा ये ट्रीज माने सबटो बड़ बड़ सब सबटो ऊपर लेवल रे था तापर shrub जेटा कि shrub माने होची छोटा गछ तमा सेकंड लेवल रे थांती और herbs and grasses कोन ना सबटो तळ जगह थांती जेने सबटो छोटा तमार सबटो तळ लेयर को ऑक्युपाई करथान ताऊ कोन स्ट्रैटिफिकेशन माने तने कोन में बुझला हमें ना vertical distribution of different species occupying different levels. Vertical distribution of different species occupying different levels. तापर कोन लिखवा मेन कथा आसला. The components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect. ताने components of ecosystem कौन ना productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycling. एटा मन रखो एग्जाम सब बेले आसे. Which of the following are the components of ecosystem? But which of the following are not the ecosystem? No, not the components of ecosystem. ये कौन है productivity किसी ଗୋଟେ बनेवा जेटा कि हम पढ़ते input बोली पढ़ते decomposition में जान जो गोटे जिनस मरीगला पर गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरीगला पर ताको जो माइक्रोब्स माने
माइक्रोस्कोप जो कीटाणु मान ताको जो डिग्रेड कर दियंती ताको सब नष्ट कर दियंती ताको कहते डिकम्पोजिशन। एनर्जी फ्लो हम तार केमती गोटे ये रु आउ जो गोटे स्पेसीज को केमती ताकर एनर्जी फ्लो हबो माने जेमती प्रोड्यूसर हमर के प्रोड्यूसर के ग्रीन प्लांट्स को जताले कंज्यूमर्स माने खाइबे माने हार्बिवर्स प्राइमरी कंज्यूमर जत खाइबे तांको बाको केमती के एनर्जी जीवो पुणी हार्बिवर्स जत कार्निवर्स माने खाइबे से तांकर एनर्जी सेटा केमती जीवो तांको बाको सेटा कहते एनर्जी फ्लो। आ न्यूट्रिएंट साइकिल माने धर तम डिग्रेड गोटे ये हे होला तापर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सब सॉइल रे रहला ताको केमती पुणी रीअपटेक करिवो गोटे जगह रे गोटे रीअपटेक हो त साइक्लिंग हो केमती टोटल अर्थ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट केमती समान रहबो सेटा होची न्यूट्रिएंट साइकिल। तो एही चारटा तला प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होची चारटा कंपोनेंट इकोसिस्टम रो। To understand each of to understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take an example of a small pond. ठीक है this is fairly a sustainable self-sustainable unit, rather simple example that explain even complex interaction that exist in a aquatic ecosystem. हमें pond example लेके पूछा a pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic characters components of an ecosystem are well exhibited। तो कहला जे तो पॉन्ड गोटे सालो वाटर बॉडी जेटा होचे गड़िया पोखरी जेतरे कि ऊपर जो चारटा जाको बेसिक कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो न्यूट्रिशन हम चारटा जाको देख परिया। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond। ताले कोन कहला ना एबायोटिक कंपोनेंट के रहला वाटर एबायोटिक कंपोनेंट होची वाटर पोखर रो एबायोटिक कंपोनेंट होची वाटर आता है तो सब dissolved with all the dissolved organic and inorganic substances and rich soil deposit at the bottom of the pond। तर पहला एबायोटिक कंपोनेंट कोन ना वाटर तार dissolved in the organic और inorganic molecules और तार जो तळ जो माटी रहला soil रहला सेडा कोन ना और inorganic substance धरा होचे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द pond। But the solar input, the cycle of temperature, day length, and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. The autotrophic component include phytoplankton, some algae, and the floating, submerged or marginal plants found at the edges. Study कौन लिखला? जे abiotic component लिखला, abiotic component रे एमाने भी आसे कौन ना solar input, cycle of temperature, day length, other climatic condition regulate the rate of function of the entire pond. environmental components, environmental factors जमते के solar input, cycle of temperature, day length, and other climatic conditions ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା rate of function of the entire pond को regulate କରନ୍ତି। जे ଖରା ଦିନ ଯଦି ବେଶୀ warm condition ଦେବ ତାହେଲେ ବେଶୀ phytoplankton ମାନେ ବଢିବେ ତାକୁ ମାଛ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ଶୀତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କମ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଟାୟର ପଣ୍ଡ ର ରେଟ୍ ଅଫ ଫଙ୍କସନ ଡିଟରମାଇନ୍ କିଏ କରେ ନା ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଦ ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ଲାଗିନା ଯେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ସମ୍ ଆଲଗା ଏଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସବମର୍ଜଡ୍ ଅର ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ फाउंड एट द एज। फाइटोप्लाଙ୍କଟନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଆଲଗି ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ then floating submerged marginal plants जो भासुची कि अधा बुड़ा के पूरा बुड़ी की रही जो plants समय कौन कहते समय होचले autotrophic components समय होची autotrophic components of the pond। The consumers are represented by the zooplankton। The consumers are represented by the zooplankton। zooplankton माने कौन जब जो एनिमल या किंगडम जति जे रहले समान होबे zooplankton। the free swimming and bottom dwelling forms। the consumers are represented by zooplankton, the free swimming and bottom dwelling forms। the decomposers are the fungi, bacteria, flagellate। decomposers are the fungi, bacteria, flagellate। तो जानिছো ये fungi, bacteria और जानिছো जो fungi, bacteria और plant को जाको ଆମେ decomposer बोली को flagellates मान को decomposer मान को तमन जेते डेड बॉडी को डिकम्पोज करते तो सेठी लिखला कोन
Now fungi, bacteria, flagellate, एमान होचे decomposers that are abundant in the bottom pond. Bottom pond बहुत अधिक number रहता. This system performs all the functions of any ecosystem or of the biosphere as a whole. That is conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of sun by the autotrophs, consumption of autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use of or used by the autotrophs. These events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy toward the higher trophic level and its dissipation and loss at the heat to the environment. एतिर कौन लिखला से जो कहूला जे आम पॉन्डटा गोटे आम पूरा एग्जांपल गोटे आम आराम से देखै परिबा कि इकोसिस्टम केमिति तो सेटा से लिखला एटी से लिखला एबायोटिक कंपोनेंट के थिले एटी लिखला ऑटोट्रॉप्स के थिले माने जे खाया बनौथिले एटी लिखला हेटेरोट्रॉप्स के थिले के अन्य मान को खाउथिले तो तापर से लिखला जे एई सब सिस्टम कोन करे ना गोटे इकोसिस्टम और बायोस्फीयर फंक्शन को एज ए होल करूछ केमति ना conversion of inorganic material into organic material with the help of radiant energy of sun by the autotrophs. Autotrophs माने कोन होली ग्रीन प्लांट माने कोन करछली ना inorganic material को organic material कन्वर्ट करछली को देकी ना सोलर एनर्जी यूज करबी सन और रेडिएंट एनर्जी को यूज करबी तार कोन ना consumption of the autotrophs by the heterotrophs को heterotrophs माने खाइले then decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use of autotrophs एडी लेखले जे बैक्टीरिया फैक्टर सब अछि फंजाई बैक्टीरिया फ्लैजेलेट अछि तो माने कोन करले डिकम्पोजिशन करले बॉडी को आते तो जहां भी बाहर ताको माटी से मिस होता मिनरलाइजेशन ही होला of the dead matter to release them back for the use of autotrophs. These events are repeated over and over again. एटा बारंबार होछि. There is unidirectional movement of energy towards high trophic level. High trophic level माने कोन आमे आगु वाले पड़े पिरामिड जते पड़े देखो तळरू ऊपर लेवल माने ऑटोट्रॉप्स माने जमाने प्राइमरी प्रोड्यूसर तबे कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एमपी तळरू ऊपर को गले पिरामिड रे एनर्जी कोन हुए ना कमी कमी जाए एनर्जी फ्लो तळरू ऊपर को जाए और सेटा पे डिसिपेट हेइ छै केमती ना डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ द हीट टू द एनवायरनमेंट एनर्जी तळरू ऊपर ट्रैफिक लेवल लोअर ट्रैफिक लेवल हाई ट्रैफिक लेवल को फ्लो करे यूनिडायरेक्शनल बोले मन रखियो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हुए ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଲେଭେଲ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏନର୍ଜି ର ଡିସିପେସନ ଏଣ୍ଡ ଲସ୍ ଏଜ ଏ ହିଟ୍ ଅଫ ଟୁ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଏନର୍ଜି ଗୁଡା କେତେବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହୁଏ ଆଉ ବାକି ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ହିଟ୍ ଆଉ ହିଟ୍ ରେ ଲସ୍ ଆଉ ଡିସିପେସନ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଏଟା ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଆମକୁ କଣ କଣ ଶିଖଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ना फास्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम फास्ट कंपोनेंट इकोसिस्टम के ना प्रोडक्टिविटी हमें प्रोडक्टिविटी विषय पढ़िया ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन दैट कौन लिखला एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन हम जानि जदी हम सूर्य जदी चली होला सूर्य जदी गोटे दिन पाए भी जदी चलिगला कि बंद ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ କାମ କଲାନି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରିବନି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରିବନି ପୁରା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ सोलर एनर्जी ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଏତିକି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଲାଇଫ ସଷ୍ଟେନ କରୁଛେ ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ଇନପୁଟ ଅଫ सोलर एनर्जी ପାଇଁ କରୁଛି सोलर एनर्जी କଣ କରୁଛି ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ କୁ ଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା सोलर एनर्जी लिखले कोन ना बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन primary production is defined लिखले कोन ना primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis तो कौन लिखले प्राइमरी प्रोडक्शन होची amount of biomass or organic matter biomass माने biomass मतलब है organic matter तो amount of biomass or organic matter produced per unit area per unit time by plants during photosynthesis that is primary production it is expressed in the term of weight or energy एटा को टर्म में एक्सप्रेस है the weight रे हम करे ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर माने कोन पर यूनिट एरिया लिखछि ना यदि पर यूनिट एरिया लिखिछि तो पर यूनिट एरिया लेक्चिबिलिटी मीटर स्क्वायर रहउछि पर यूनिट एरिया लेक्चिबिलिटी एटा पर मीटर स्क्वायर लिखिछि माने एरिया
The rate of biomass production is called productivity. तो कौन लिखला ना the rate of biomass production is called productivity. क्या rate of biomass formation होगी तब ना productivity कहला. It is expressed in the term of gram per meter square per year or kilocalorie per meter square per year to compare the productivity of different ecosystem. हमें कौन निकला ना बायोमास प्रोडक्शन को कौन कहला ना ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर अगर यूनिट टाइम रे यदि पचाले जे पर ईयर रे यूनिट टाइम को हमें एठी ईयर बनेले तने गोटे ईयर रे केते फॉर्मेशन होची बायोमास तो ताको हमें लिखिबा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एटा लिखिबा जे को टर्म एक्सप्रेस हुए. It can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. एटा को हमें कोसे डिवाइड करिया ना gross primary productivity को और net primary productivity. Then gross primary productivity कौन? Gross primary productivity is an ecosystem is the of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. एटा पूरा easily लिख देला. तने gross primary productivity कहा को जाए? और ecosystem में rate of production of organic matter को rate of production of organic matter during photosynthesis को कौन कहा जाए ना gross primary productivity. A considerable amount of GPP is utilized by plant during in respiration. तार कौन गला जति से gross primary productivity formation करा जति से biomass formation करा photosynthesis जो energy से utilize करा तार बहुत बड़ा को amount उतर जाए ना respiration रो waste है respiration is the waste process for the plant रेस्पिरेटर से निज प्लांट रो जति एक्टिविटी करियो माइटोकॉन्ड्रिया नै कि तो जो सूर्य टू जो एनर्जी आसला तार जो फोटोसिंथेसिस करी से एनर्जी यूटिलाइज करथला सोडा किजे से निजर निजे जिंदा रहया पे करियो निजे पहुंचिया पे करियो सस्टेन करिया पे करियो तो तार जो माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन टाइम रे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो जीटीपी एटीपी सब रिलीज हो सेडा कोन रेस्पिरेशन तार कोन ना एनर्जी यूटिलाइज होला तो सेडा कोन लिखला ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस तब को कोला ना रेस्पिरेशन लॉस को आला तेरा कौन कोला ना रेस्पिरेशन लॉस को आला तेरा जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू एनपीपी तेरा कौन कोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs, that is herbivores or decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. कंज्यूमर तो किसी बना दे फिर भी तांको जो बॉडी जो खाएगी मसल्स बढ़ला ताप तांको जो आउन खाएगी ताको कहला ना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहला सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का कहला जदी कंज्यूमर्स माने किसी फॉर्मेशन करे ताको आजु सेकेंडरी productivity जदी rate of formation of new organic matter by consumers is called secondary productivity. तार एटी कोन लिखला जीपीपी तो प्लांट बनेला प्रबल ता जति पत्र रहला जीपीपी कोन ला प्लांट र पत्र रहला ता रेस्पिरेटरी लॉस कोन प्लांट निजो ग्रोथ पे यूटिलाइज कला तापर एनपीपी कोन जति के बाकी रहला कोन का पे ना हमर कंज्यूमर्स मान को पे तो एटी लिखला एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रोफ्स herbivores or decomposers. तापर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी depends on the plant species inhibiting in a particular area. It also depends on a variety of environmental factors, availability of nutrients and photosynthesis capacity of plants. like primary productivity काका पे डिपेंड करेला से जगह प्लांट स्पेसिस कोन होची से भलो से करि पारची प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्शन ना करि पारुनी तब it also depends on the variety of environment factor ଉପରେ भी depend करे obviously then the availability of nutrient or photosynthetic capacity of the plant environment factor जब सब बड़े वर्षा हो तो यदि ample सनलाइट नथि होता ने प्रोडक्शन कम हो जदि तामे कोन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जदि गोटे सैंड ना डेजर्ट एरिया तो ताका किछि न्यूट्रिएंट नाही तो सेठी गछ बढी पारिबो तो सेठी किछि प्रोडक्शन हबनी तामे कोन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी केते रहबा होता गोटे डेजर्ट प्लांट जारे पत्र ही नाही से भलो से फोटोसिंथेसिस कर परिबोनी जेमते कि हमर एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लांट माने करिवे तो एवडा सब डिपेंड करे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम जे का ऊपर डिपेंड करछि तापर कोन लिखला या तापर जहा लिखछि तो मन रखियो ता एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर रो एनपीपी होल बायोस्फीयर रो एनपीपी कोन
ना approximately 170 billion tons of dry weight of organic matter, 170 billion tons of dry weight of organic matter, जोउथरे कि 70% होची ना despite occupying 70% of the surface, productivity of oceans are only 55 billion tons. ocean of productivity only 55 billion tons. ऐसे देखा गला जदि वो हम अर्थ रे जदि हम अर्थ रे 70% होची ocean, 70% होची ocean, 30% होची land. फिर भी कौन ना ocean मानकर एनपीपी होची 55 बिलियन टन्स जोटे कि ताने बाकी केते रहला सर 15 बिलियन टन्स. सर 15 बिलियन टन्स होची सरफेस रो ocean मानकर होची 50 बिलियन टन्स. काहे कि 50 बिलियन टन्स ला 55 बिलियन टन्स ला काहे एते कम होला काहे ऑब्वियसली मैंने जो कहीं गला एटी जामले फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ सेटे जति सेटे सब छोटे छोटे प्लांट्स आते तो से इतने सेटे कम एनर्जी प्रोडक्शन हो किंतु लैंड कोन बड़ बड़ प्लांट्स आते जे मान पर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी अधिका इतने लैंड रे कोन बना एनपीपी सबटो अधिका हो तापर कोन पडिबा हम टॉपिक ना डिकम्पोजिशन प्रोडक्टिविटी गला एबे पडिबा डिकम्पोजिशन. You may have heard the earthworm being friend as farmers friend. earthworm कोन ना earthworm होची कृषकर बंधु. You may have heard of the earthworm being referred to as farmer's friend. This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening the soil. complex organic matter को degrade करते आउ माटी को लूजनिंग ऑफ द सॉइल माने माटी को हल्का करते माटी को हल्का करने कोन हो माटी भीतर भलो एयर पास हो भलो एयर पास रे माटी ज्यादा लाइक छडा दरकार माटी जो माइक्रोब्स बने तांदी समान सेटा गछ पे बहुत दरकार जंती कि हमरो रूट प्लांट रूट्स भी जंती रेस्पिरेशन कर पारो तो माटी को हल्का करियाटा दरकार सेति में जिया को कृषकर बंधु बोली कहआ जाय. Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients, and the process is called decomposition. Then, कौन कहले process of decomposition? Decomposer माने कौन करती? Decomposer माने complex organic material को inorganic substance like simple inorganic substance. then the carbon dioxide, water, and nutrient ये करती, and the process is called decomposition. Dead plants remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals, including fecal matters, constitutes detritus, which is the raw material for decomposition. तारे कौन कहला ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ କौन ଶିଖିଲା ଆମେ ନା ନୂଆ ଟର୍ମ ହଉଛି detritus. detritus କौन कहला ନା dead plant ଗୋଟେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛ ତାର ଭୂଇଁ ଉପରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ତାର ବାର୍କ ମାନେ ଉପର ଯୋଉ तार जो एपिडर्मिस लेयर जो था बाहर तो तुम पढ़िथिबो ये रे प्लांट एनाटॉमी रे पढ़िथिबो तापरे बार्क फ्लावर्स डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर्स कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस मतलब जेति गोटे जंगल जो रास्ता जंगल भूमि ऊपर तुमको जहां भी पढ़िते देखा जाय ता कोन ना डेट्रिटस कहला से माने कि डिकम्पोजिशन होबा को रेडी थांती ता कोन कहला ना डेट्रिटस कहला which is the raw material for decomposition. The important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humidification, and mineralization. ताने हमें पढ़िबे ए जो पांचटा ना लिख देला नुआ जिंस तन ताको कोन कह जाय ना फर्स्ट आसीबे कोन ना फ्रैगमेंटेशन कोन डेट्रीवर्स के ना अर्थर जिया कोसगर बंदो डेट्रीवर्स को हाईलाइट कर दिया डेट्रीवर्स माने क्यों डेट्रीवर्स माने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते डेट्रीवर्स माने अर्थर retrieves example earthworm break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. हमें एडी पढ़िଥିଲେ जे earthworm माने complex organic compound matter को break down करते तो सेठी लिखला detritus जेमति पत्र अछि पत्र को खाइ के जदी छोट छोट करी कि से जो ये earthworm जो फीसेस से बाहर कर देला कि उल्टी कर देला जहां भी गला तो सेटा को कहला ना फ्रैगमेंटेशन कहला एटा इजीली बुझि होछि तो फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट करले माने फ्रैगमेंटेशन गोटे बड़ पत्र को जदी फ्रैगमेंट रे कन्वर्ट करले ताको फ्रैगमेंटेशन तब के कहला ना डेट्रीवर्स माने कहन डेट्रीवर्स की ना earthworm होछि डेट्रीवर्स. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt. By leaching माने कोन हला leaching रे कोन हला ना जेडा वाटर सोल्यूबल जति कंपोनेंट्स थो जति वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थिला समय कोन कहते वाटर सोल्यूबल से माने पानी पले से पानी सहित भेदे कि कोन कहते ना माटी रे पूरा तळगु तळगु पळांती आ अनअवेलेबल सॉल्ट भाबी
थाते माने माटी जदि बहुत तळकु चली गले और सॉल्युबल ये माने वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स माने तो गछ बढ़िया को जीवो बा गछ फोटोसिंथेसिस करिया जीवो ता चेहरे तो सेति बाट पाइबोनी तो सेही जो सॉल्ट बा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो सेति रहिला समय किछि यूटिलाइज रे आसलेनी तो ताको कोन कहै जो ना अनअवेलेबल सॉल्ट को समय प्रेसिपिटेट केमति होंती ना एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट माने केमति प्रेसिपिटेट होंती ना अनअवेलेबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट होंती Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler organic substances. This process is called catabolism. ताने कौन करले ना बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स माने डिग्रेड करंती डेट्रिटस को बैक्टीरिया और के फंगाई बैक्टीरिया फंगल एंजाइम्स माने कौन करंती तमेने एंजाइम रिलीज करंती निजर डेट्रिटस को सिंपलर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट करंती ताको कौन कहला ना कैटाबोलिज्म तो जान चाहिए किछि एक्स्ट्रा करो कैटाबोलिज्म कहले तो आमे एठी देखिले जे तमे जडी पांचटा ना पढले फ्रैगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ताइ तो फर्स्ट तीनटा गोटे एनवायरनमेंट रे और लास्ट दीटा जेटे ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन अलग एनवायरनमेंट रे तने मु तुम बुझो धर जो गोटे जगह रे कोन होला ना गोटे पत्र पड़िछि गोटे जगह रे गोटे पत्र पड़िछि गोटे जगह रे गोटे पत्र पड़िछि तार फास्ट कोन होबो तार फास्ट कोन होबो ना फ्रैगमेंटेशन ही कोन होला ना दीटा जिनस बने छोटे 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 कोन बोले छोटे 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 जिनस बनला फ्रैगमेंटेशन के कला डेट्रिवर्स कला तो छोटे छोटे कन्वर्ट कला तब ए छोटे छोटे रु एई पार्ट एति जो तमे देखो एटा तो सपोज करे ना एमन वाटर सॉल्युबल एमन हेले वाटर सॉल्युबल सॉल्युबल हेले कोन हबो तने लीचिंग रे पळेबे लीचिंग रे पळे कोन हबो ना तळे पर अनअवेलेबल सॉल्ट है कि पूरा माटी सब तळे रहबे तापर एठी जे ये रहले वाटर इनसॉल्युबल एटा वाटर इनसॉल्युबल याको कोन करिवे याको कोन करिया ना बैक्टीरिया माने एठी पसिकी ता भीतर कोन करिवे ना तार डिकम्पोजिशन करिवे डिकम्पोजिशन माने कोन हबो ना कैटाबोलिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म केमति ना पूरा आयरन पार्टिकल बाहर कर देबे आयरन माने ये पूरा मेटल पार्टिकल बाहर कर देबे कार्बन डाइऑक्साइड ये H2S एंड सब सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट कर दे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर दे ताने कोन होला जदी गोटे जगह रे गोटे डेड बॉडी पड़ रही छी माने डेड लीव्स एक किछ पड़ रही छी ताने फास्ट तार कोन बना तार फ्रैगमेंटेशन के करिवो डेट्रिवर्स माने करिवो डेट्रिवर्स माने के ना अर्थवर्म एग्जांपल हो अर्थवर्म तो डेट्रिवर्स माने कोन करिवे ना डेट्रिटस को छोट छोट सिंपलर ना स्मॉलर पार्टिकल्स ब्रेक डाउन करे ता को फ्रैगमेंटेशन ता क्षेत्र जे बडा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थो समान पानी सहित पूरा तळगु पळेबे सेडा कोन को जो ना लीचिंग आ जहां बाकी रह सेडा को बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स माने डिग्रेड कर दे कि इन सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करिवे ता कोन को हला ना कैटाबोलिज्म तो कोन कहला ना कैटाबोलिज्म तापरे कोन लिखबा ना इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus सब गुडा जो ऊपर जति हम कहि तीनटा जो कथा हरतला सडा detritus simultaneously हुए humidification and mineralization occur during decomposition in the soil then humidification and mineralization can be one decomposition of this in the soil where humidification leads to accumulate a dark color amorphous substance called humus एटी ततला नॉर्मल डेड बॉडी कोन होतला डेट्रिटस तला एटा ये कोन ना dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial activity and undergoes decomposition at an extremely slow rate like undergoes decomposition at the extreme slow तो नाम है humus रे characteristics पढ़ले humus कोन ना गोटे dark colored amorphous substance जेटा कि highly resistant to microbial activity आउ कोन ना अंडरगोस डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हुए समान को काहे कि समान माइक्रोबायल एक्शन को बहुत रेजिस्टेंट ना तो समान डिकम्पोजिशन आराम से होबे तो सही कथा लिखि छी बीइंग colloidal in nature तने कोन लिखे मन रखिया ना ह्यूमस इज colloidal in nature it serves as a reservoir for nutrients एटा कोन ना सर्व्स एज ए रिजर्वोयर फॉर न्यूट्रिएंट्स ए जो प्रति लाइन रे यार इंपोर्टेंट अछि एग्जाम सब आसीबो आ ह्यूमस जदी ह्यूमिडिफिकेशन बाय ह्यूमस विषय पत्र त एडा सब लिखिया भी होबा एग्जाम रे द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स occur by process known as mineralization
ह्यूमस कौन ना डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ह्यूमस एमती नहीं कि पूरा रेजिस्टेंट कि माइक्रोब पिछ कर परिबेनी ह्यूमस करिवे किंतु ସେମାନେ कौन ना रेट होची बहुत स्लो काहे कि ना ସେମାନେ हाईली रेजिस्टेंट थांती माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत स्लो स्लो आ कौन हुए ना से माइक्रोबियल एक्टिविटी करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जब रिलीज होला त कौन कला ना मिनरलाइजेशन करा त कौन करा मिनरलाइजेशन करा कैटाबोलिज्म मिनरलाइजेशन भीतर कंफ्यूजन बनी कैटाबोलिज्म मिनरलाइजेशन अलगा डेट्रिटस को अगर के बस फ्रैगमेंटेशन करके ताको जदी बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम माने किछ कला ता कुआ जो कैटाबोलिज्म आ यदि ह्यूमस रे जतळे हला ह्यूमस रे हले कोन कुआ जो ना मिनरलाइजेशन ह्यूमस रे हले कोन हबो ना मिनरलाइजेशन decomposition is largely an oxygen requiring process decomposition is largely an oxygen requiring process এটা মনে রাখিব decomposition is more largely oxygen requiring process the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors ତାର କହିଲେ ନା the decomposition का ऊपर डिपेंड करे decomposition detritus ର chemical composition ଆଉ climatic factor ऊपर डिपेंड करे in a particular climatic condition decomposition rate is slower if decomposition is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar then I'm first like composition of detritus ऊपर केमती डिपेंड करूची जदी decomposition and detritus जदी lignin और chitin भलिया हार्ड सब्सटेंस lignin और chitin भलिया हार्ड सब्सटेंस तो कहे lignin और chitin भी रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी तो सेठी डिकम्पोजिशन स्लो हो और क्विकर केमते हो यदि सतरे रिच इन नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस तो जेटा के आराम से कोई भी एंजाइम को डिग्रेड कर दबो कोई भी बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड कर दो तान से डिकम्पोजिशन क्विकर हो मेडिसिन एक केमते डिकम्पोजिशन रो केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करूछ temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes और the environment factor कौन ना टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर होचे द एनवायरनमेंट फैक्टर जेटा कि डिपेंड करे वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन व्हेreas low temperature anaerobic inhibit decomposition resulting in build of organic materials ना कौन लिखला ना वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर करे डिकम्पोजिशन और लो टेम्परेचर एंड anaerobic inhibit करे डिकम्पोजिशन resulting in the building of ऑर्गेनिक मटेरियल तो नेट लेकिन जो ऑक्सीजन तो सब निहाती दरकार डिकम्पोजिशन पाई से एनगी वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट कोन आराम से डिकम्पोजिशन होबो और लो टेम्परेचर ठंडा लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन रे कोन होबो ना डिकम्पोज होबो इसमें हमें फ्रीज रे तो खाइबार को कहीं ना सीजन में डिकम्पोज न होबो लो टेम्परेचर अछि तापर बंद भी अछि एनारोबिक वाला कंडीशन में सृष्टि होछि तो सेति पई लो और एनारोबिक कंडीशन रे कोन होबो ना डिकम्पोजिशन स्लो हम तापर लिखिबा एनर्जी फ्लो तापर हम कोन पढिबा ना एनर्जी फ्लो कोन except for the deep sea hydrothermal ecosystem sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth खाली जो डीप सी रो जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम तक अलग इकोसिस्टम अछि सेटा भी हम पढिया दरकार नहीं sun is the only source of energy for all ecosystem out of incident solar radiation less than 50% is less than 50% is less than 50% is कौन ना photosynthetically active radiation by far less than 50% of it is photosynthetically active radiation जति हमर solar radiation हमर पड़छ ताइ भितरे less than 50% is photosynthetically active माने photosynthetically active radiation माने ताको प्लांट माने निजर photosynthesis से यूटिलाइज कर परिबे से wavelength of radiation तक We know that plants and photosynthetic bacteria autotrophs fix sun's radiant energy to make food from simple or inorganic materials. तो हम जानते हैं जैसे हम simple inorganic material रो फूड केमती बनाते हैं ना प्लांट को ना सन की यूज करके तापरे sun's now plants capture only 2 to 10% of PAR and this small amount of energy sustains the entire living world. तो प्लांट माने कौन करती जब PAR मिलता है लेस देन 50% तार 2 to 10% को ही यूटिलाइज कर पारते कोन ना एनर्जी प्रोडक्शन करी के हम लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करिया पाए तने पूरा धर जदी 50% जदी 2 to 10% को से पीआर यूज करते तने पूरा इंसिडेंट सनलाइट रो 1 to 5% से यूज करते पूरा इंसिडेंट सनलाइट रो 1 to 5% यूटिलाइज करते तने एते कम परिमाण रे सोलर एनर्जी यूज करी कि हम पर लिविंग वर्ल्ड कोन करछ ना सस्टेन होछ हम लिविंग वर्ल्ड पूरा जिंदा रही छी
So it is very important to know how the solar energy captured by plants flow through different organisms as an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producers and then to consumers. Is this keeping with fast law of thermodynamics? Obviously. Currently, like you, ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କ'ଣ ନା further ecosystems are not exempt from second law of thermodynamics. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ecosystem ନା second law of thermodynamics ରୁ exempt ନଥାନ୍ତି. ମାନେ କ'ଣ second law of thermodynamics କ'ଣ ଯେ ଯେତିକି ତମେ ଏନର୍ଜି ଇଏ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ ଯଦି ସମାନ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିଛି ଏନର୍ଜି ହିଟ୍ ଡିସିପେଟ୍ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ the need a constant supply of energy ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ କହିଲେ କେହି ବେଳେ ବି ଏଫିସିଏନ୍ସି 100% ହବନି କୋଉଠିରେ ବି efficiency 100% ହବନି they need a constant supply of energy to synthesize molecules they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness disorderliness ଆମେ physics ରେ ପଢିଛେ entropy ଯେ disorderliness entropy ବଢିଲେ energy loss ବଢିବ ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛି they need a constant supply of energy to synthesize molecules they require second law of thermodynamics partly second law of thermodynamics follow करे तापर ସେମାନେ କଣ they need a constant supply of constant supply of energy need କରନ୍ତି to synthesize molecules that they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness second law of thermodynamics follow କରନ୍ତି the green plant in the ecosystem are called producers. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous or woody plants. Likewise, producers in an aquatic system are various species like phytoplankton, algae, and higher plants. Phytoplankton or algae or higher plants are aquatic ecosystem or primary producer. Our terrestrial ecosystem is woody plants, herbaceous plants are primary producers. We have read about the food chains and webs that exist in the nature. Food chain or webs with them छोटा बड़ा पड़ी पड़ी अस्तित्व. So starting from the plant or produces food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on the plant or on other animal and in turn is food for another. तो मतलब food chain ना किंतु ना animal जिन plant को खाएगा से animal को भाई भी food ही जाए पारे. The chain or web is formed because of this interdependency. The chain or web is formed because of this interdependency. The no energy that is trapped into an organism remains in it forever. वो भी energy जो गोटे organism जो खाऊची producer खाऊची ता पाकरे energy trap एक करवेनी तारे heat पावे dissipation हुए अब मोला पर भी सड़ा तो ताकू तो अन्य बारी खाने से तरह भी energy transfer हुए the energy trapped by the producer cells is either passed on to the consumer or the organism dies. Death of an organism is the beginning of detritus food chain or web. Detritus food chain माने कौन ना decomposition मार्ग ने जो food chain हुए ताको detritus food chain by web कहते हैं. Death of an organism is the beginning of detritus food chain. All animals depend on plants directly for their food needs. Since they are hence called consumers. And also heterotrophs plants ମାନେ କହନ୍ତି autotrophs ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ plant ଉପରେ depend କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି heterotrophs if they feed on the producer the plant they are called primary consumer if they feed on the producers the plant they are called primary consumers if the animal eat another animal which in turn eat the plant are called secondary consumers ମାନେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଲା primary producer ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇଲା ସେ ହଉଛି primary consumer primary consumer को ଯିଏ ଖାଇଲା ସେ ହଉଛି secondary consumer ଜଣେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ହଉଛି tertiary consumer ତାର ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି likewise you could have tertiary consumers too obviously the primary consumers will be herbivores so ଲେଖିଛି obviously primary consumers କିଏ ହେବେ ନା herbivores ମାନେ ହେବେ କାହିଁକି carnivores ମାନେ ତ plant ଖାଇବେନି ତ primary କିଏ ହବ ନା herbivores some common herbivores are insects birds mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem. There are some common herbivores here. Na insect, birds, mammals in terrestrial ecosystem, mollusks in aquatic ecosystem. Then it among the ecosystem primary consumer our terrestrial तो तुम जानी जो insect birds मामला होती terrestrial ये herbivores. The consumers that feed on these herbivores are carnivores and more directly primary carnivores. तने हमें प्राइमरी कंज्यूमर देखते हैं तब रेटे प्राइमरी कार्निवोर्स देखले कार्निवोर्स ना हार्बिवोर्स को जे खाइला से प्राइमरी कार्निवोर्स और तब रे कार्निवोर्स को जे खाइला से होती सेकेंडरी कार्निवोर्स
The primary carnivores को जे कहा है वो secondary carnivores. A simple grazing food chain is depicted below. Grazing food chain mainly terrestrial food chain है एटा था grazing food chain था ताको लिखा है जी कौन ना grass producers ताको goat खाया से primary consumer ताको main खाया से अलग secondary consumers से कौन है ना secondary consumer है তারপর detritus food chain. Detritus food chain মানে কোন decomposition ର food chain decomposition ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ କୁହାଗଲା detritus food chain. The detritus food chain begins with the dead organic matter. Detritus food chain କୋଉଠୁ start ହୁଏ ନା begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter. Detritus ସେମାନେ nutrient requirement କେମିତି ହାସଲ କରନ୍ତି ନା डेड ऑर्गेनिज्म by detritus को degrade करके dead organic matter by detritus को degrade करके these are also known as saprotrophs. sapro माने to decompose. These are also called saprotrophs. एटा मन रखिबो saprotrophs कोन एग्जाम तो जेता आसे पुणी भूली जो जे saprotrophs को किछु गोटे थिला बोली these are known as saprotrophs. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ decomposers ମାନେ ନିଜର କେମିତି କରନ୍ତି ନା decomposers ମାନେ ନିଜର stomach area रो ये area रो enzyme degrading enzyme ସବୁ proteolyte ଯେମିତି ଆମ ଯେମିତି ଆମ ବଡି protein को digest କରିବା ପାଇଁ protease ଥାଏ ଅଛି lipid ପାଇଁ lipase ଅଛି carbohydrate ପାଇଁ amylase ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ enzyme ସବୁ ନିଜ ବଡିରୁ ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡା କଣ କରେ ନା complex organic material को complex dead organic material କଣ କରେ ना simple inorganic material convert करे जेटा कि समय बापर निज भीतर को absorb कर नियंती. In an aquatic ecosystem, GFC, grazing food chain, is the major conduit of energy flow. एइटा समय मन देखो एटा तुम कंफ्यूज ग्रेजिंग माने कि टेरेस्ट्रियल एरिया रे खाली काफ चलुची लो ग्रेजिंग समते नहीं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम सबटो मेन की ना ग्रेजिंग फूड चेन. As against this, in a terrestrial ecosystem, larger fraction flows through detritus food chain than the grazing food. तो ये जो सब important question समझते confusing बोल करते ना terrestrial ecosystem रे हो चुकी ना detritus food chain. Terrestrial ecosystem रे energy flow mainly detritus food chain रे हुए अब aquatic ecosystem रे energy flow mainly grazing food chain रे हुए. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. It obviously detritus food chain grazing food chain is connected to. Example comes some of organisms of detritus food chains are paired to GFC animals. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, growers, etc. are omnivores. Those natural interconnection of food chains make it food web. तो कौन लिख रहा है? तो किए एटी omnivore किए काको खाऊची सही कथा लिख रहा है किए काको खाऊची जे डीएफसी ताको जीएफसी वाला भी ये खाई दउची जीएफसी वाला को भी डीएफसी वाला डिग्रेड कर दउची त एमाने सब के काको भी खाई पाउची सेही नै सब वाला कोना फूड वेब फूड चेन थिला कोन गोटे लिनियर थिला तळो ऊपर भी थिला फूड चेन तापर फूड वेब हो जेटा ट्रूली हम नेचर अछि जेटा की भी काको भी खाई परिबो त वाला फूड वेब. Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. देखा निजर फीडिंग हैबिट को लेके निजर काम केते शिकार कर जन से अनुसार तमान गोटे रखा जायछि गोटे प्लेस रे रखा जायछि तको लेवल्स रे रखा जायछि based on the source of their nutrition or food organisms occupy a specific place in the food chain that is known as the trophic level. तो निजर फूड हैबिट को नहीं कि समान फूड चेन दा गोटे लेवल रे समान थांती ताको कोन ताको ट्रॉफिक लेवल कोनती तो कोनती ना निजर ट्रॉफिक लेवल कोनती प्रोड्यूसर्स बिलोंग द फास्ट ट्रॉफिक लेवल herbivores द प्राइमरी कोन सेकंड एंड कार्निवोर्स इन थर्ड एंड तापर सो ऑन यानी कोन लगला प्रोड्यूसर्स माने कोन थांती ना फास्ट ट्रॉफिक लेवल herbivores माने कोन थांती ना सेकंड ट्रॉफिक लेवल और कार्निवोर्स माने कोन थांती ना थर्ड ट्रॉफिक लेवल थांती कार्निवोर्स माने थर्ड ट्रॉफिक लेवल तापर प्राय सेकंड कार्निवोर्स माने फोर्थ ट्रॉफिक एंड सब ट्रॉफिक लेवल से थांती तो एटी कोन लगला जे ट्रॉफिक लेवल्स कोन देखला ना गोटे इकोसिस्टम रे निजरो खाइबा हैबिट को नहीं जदी ऑर्गेनिज्म मान को किछि लेवल रखा रहता है को जे ट्रॉफिक लेवल को आता है जदी सिस्टमाइज करके रखला ताऊ कहला ट्रॉफिक लेवल्स ततरे प्राइमरी प्रोड्यूसर माने तांती फास्ट ट्रॉफिक लेवल तापरे प्राइमरी कंज्यूमर्स माने सेकंड तब सेकेंडरी कंज्यूमर्स माने थर्ड और हार्बिवर्स माने सेकंड तांती तो प्राइमरी कार्निवर्स माने थर्ड तांती तो एमटी सब सो ऑन चलता है रेडी लिखना सही कथा the producers माने फास्ट ट्रॉफिक लेवल था एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन एंड ट्रीज तापर एटी प्राइमरी कंज्यूमर माने होचंती सेकंड ऑफ हार्बिवर्स माने
herbivores ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି zooplankton grasshopper cow ତାପରେ carnivore birds and fish and wolf ତାପରେ fourth trophic level ଥାନ୍ତି top carnivore secondary carnivore ସେଟା main outlier ତ ଏଇଟା ହଉଛି tertiary consumer ଏଇଟା ହଉଛି trophic level diagrammatic representation of trophic level in an ecosystem. The important point to note is that the amount of energy decreases at successive trophic level. An important point कौन है? The amount of energy decreases at successive trophic level. When an organism dies, it is converted to detritus or dead biomass. It serves as an energy source for the decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at lower trophic level for the energy. बड़ी लिखला जे organism जो माने सब ऊपर trophic level रे थांती ସେମାନେ lower trophic level ରେ energy ଉପରେ depend କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ proper amount of energy ସବୁବେଳେ decrease ହେଇ ଚାଲେ each successive trophic level ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା important line amount of energy decreases at successive trophic level each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called standing growth ସବୁ trophic level ରେ ଗୋଟେ certain time ରେ କଣ ଥାଏ a certain mass of living material at a particular time ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି standing crop standing crop definition here a standing crop is measured as the mass of living organisms standing crop ମାନେ biomass or the number in a unit area the biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight the biomass को कुछ fresh or dry weight से सब calculate करती तब standing crop को biomass by number of organisms से calculate करती measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate लाइट वेट कार जो वाटरमेलन बेसी पानी अच्छी काउ को बेसी पानी नहीं तो पानी थोड़ी ना समय प्रोडक्शन कर मैन तो समय ऑर्गेनिक मेटेरियल प्रोडक्शन कर ड्राई वेट जी थी से अनुसार ही हमें बायोमास को कैलकुलेट करवा द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन रेस्ट्रिक्शन द एनर्जी फ्लो एट 10% लो एटा सब मन को 10% लो रे एनर्जी फ्लो करे only 10% of the energy transferred to each trophic level from the lower trophic level in nature it is possible to have so many levels producer herbivores primary carnivores secondary carnivores in the grazing food chain but लिखला grazing food chain केते भी लेवल हे परिबो तने एटी लिखला जे सन रो असला हीट असला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर माने खाଇବା बनेले तार सेकंड ट्रॉपिक लेवल रे प्राइमरी कंज्यूमर माने हेrbivores सेटी पुनी सब जगह तमे देखुछ हीट डिसिपेट होची हीट डिसिपेट से 10% लो 90% हीट डिसिपेट होची 10% अन्य नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाउची ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା କଣ ନା 10% लो କୁହାହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କୁହାହେଲା 10% लो କୁହାହେଲା तर ecological pyramid you must be familiar with the shape of a pyramid the base of a pyramid is broad and is narrowed down the apex one gets a similar shape whether you expect food or energy relationship between organisms at a different level ଯଦି ଆମେ organism ମାନଙ୍କର food ଆଉ energy level energy relationship को ନେଇକି ଆମେ diagram ବନେଇବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ pyramid ଭଳିଆ ହବ this relationship is expressed in the term of number biomass energy number biomass और energy एटा सब relationship को number biomass और energy रे depict करा जाए the base of each pyramid represents the producers or the first trophic level while the apex represents the tertiary or top level consumers the three types of ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number pyramid of biomass pyramid of energy हम तो देखले जे number energy और biomass को लेके हम pyramid बनो तने तीनटा ecological pyramid कौन ना pyramid of number pyramid of biomass pyramid of energy माने नंबर को जब कैलकुलेट करने ताको पिरामिड ऑफ नंबर को हला जब सब ट्रॉफिक लेवल रो बायोमास को हमें कैलकुलेट करके बनेले ताने ताको पिरामिड ऑफ बायोमास को हला और यदि एनर्जी को नहीं हम करो तो पिरामिड ऑफ एनर्जी को आजो तब हम लिखले फर्स्ट फिगर 12.4 रे कोन अछि ना पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्लासलैंड इकोसिस्टम एटा कोन मन रखिबो क्वेश्चन पर डायरेक्ट जोटा कोन এই পিরামিডটা কাগো ডিপেন্ড করে না কাগো ডিপেন্ড করে the pyramid of numbers in a grassland ecosystem only the three top carnivores are supported in an ecosystem based on the production of nearly 6 million plants एटी लिखला जे पूरा जो एटी प्रोड्यूसर थिले 6 million पाखापाखि जो प्रोड्यूसर अछंती तार प्राइमरी कंज्यूमर जो कमी गला तापर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कमी गला तापर कोन हला ना लास्ट को टर्शियरी कंज्यूमर ओने तीनटा रहला तो सेठी लिखला जो टर्शियरी कंज्यूमर अछंती जो तीनटा टर्शियरी कंज्यूमर अछंती ସେମାନେ କାହା पे सपोर्ट रे अछंती ना 6 मिलियन प्रोड्यूसर माने तीनटा टॉप कार्निवोर सपोर्ट करछन एउडी तमे जाय पदो 10% रूल से केते कम एनर्जी नेक्स्ट लेवल को जाय एटा शो करछ तापर कोन लिखला द पिरामिड ऑफ बायोमास तापर कोन अछि ना पिरामिड ऑफ बायोमास सो द शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल तो लिखला
बायोमास प्लांट्स मान प्लांट्स जदि नंबर अधिक रहिबो प्लांट्स जदि अधिक नंबर रहिबो प्लांट तने तांकर बायोमास भी बेसी रहिबो तापर छोट छोट तार प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवर्स माने कोन ना डियर हरिण छेली एमाने सब होची प्राइमरी कंज्यूमर माने प्राइमरी कंज्यूमर बा हार्बिवर्स तमका नंबर तो बहुत कम तांको बॉडी वेट भी कम तांको बायोमास भी कम होबो तापर सेकेंडरी कंज्यूमर तो आहुरी कम होबो टर्शियरी कंज्यूमर तो आहुरी कम होता सेट लिखा जे पिरामिड ऑफ बायोमास होचे sharp decrease in biomass at higher trophic level तापर एटा सब important question आसे ना inverted pyramid of biomass of small standing crop of phytoplankton supports a large standing crop of zooplankton एटा होची aquatic environment कोन हुए aquatic environment कोन हुए ना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन को कौन करे से पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ जू प्लैंक्टन को सपोर्ट करे सेटा एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास तमे भी निज बही साइड रे एटी लिखि दियो काहे एटा एग्जाम रे आसे पिला माने कंपेयर बायोमास रो ना नंबर रो एक्वाटिक रो ना टेरेस्ट्रियल रो डेट्रिस्ट्रियस रो ऑफ बायोमास त एटा ले एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखा जाए तापरे एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी एटी हम 10% लो देखि परछु ये फर्स्ट 10,000 थिला त 10% 1000 त 10% 100 10% 10 जूल तो एमती सब एनर्जी गला तने एटा कोन गले ना आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी देखो एटी 1 मिलियन थिला एटा 10,000 गला मात्र 1% तो एटी देखले जे primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into electricity. I'm sure पढ़ते photosynthetic active region तिला केते less than 50% ला तार 2 to 10% मान यूज करी पारतले तो 1% पूरा सोलर एनर्जी जितके असलो तार 1% ही प्राइमरी कंज्यूमर्स माने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माने बने परले any calculation of energy content biomass or number set to include all organisms at all trophic level. No generalization we make will be true if we make only few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level symptoms. एटा important करता है एक जे गोटे organism more than one trophic level भी consume करबा जंते हम ह्यूमन रो जे एग्जांपल लेबा हमें टॉप कार्निवोर हे परिबा काहे टॉप कार्निवोर काहे अन्य कार्निवोर ऑर्गेनिज्म काहे कि बा घास माने वेजिटेबल्स वेजिटेरियन खाय खाय के हमें प्राइमरी कंज्यूमर भी हे पर हार्बिवर्स बोले भी कोइ पे तो सीडीज लेक्ची गोटे ऑर्गेनिज्म ढेर गुडा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करि पारे आ कोन ना से एग्जांपल लेक्चर्स पर इज द प्राइमरी कंज्यूमर when it eats seeds food peas and a secondary consumer when it eats insects and worms example लेक्चर्स पर एग्जांपल लेक्ची in most ecosystems all the pyramids of number energy and biomass are operate and likely so most ecosystem रे pyramid of number of energy and biomass operate जेमति तळ बेसी producer are more in number and biomass than herbivores are more in number and biomass than carnivores so लेखिछि जे producers माने herbivores to बेसी रहबे herbivores माने carnivores to बेसी रहबे also energy रे भी सही है there are exceptions to this generalization if जेमति कि हम देखिथिले एक्सेप्शन कोन ना हमें एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन्वर्टर पिरामिड ऑफ बायोमास देखिथिले दूसरे के तो प्रोड्यूसर माने ना हार्बिवोर प्रोड्यूसर्स माने कम बायोमास थिले बट कंज्यूमर्स माने बेसी बायोमास थिले द पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी जनरल इन्वर्टर so that again general inverter because the biomass of fishes far exceed that of phytoplankton and fish माने अन्य मान को भी खाते रह सहित pyramid of energy is always upright and can never be inverted. That's our the pyramid of energy is always upright and can never be inverted because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy of pyramid indicates the amount of energy present at the each trophic level in a given timeline or annually per unit area. like pyramid of energy कहीं सब बड़े ऑपरेट थे कहीं से मैं 10% रूल फॉलो करते कहीं ना एनर्जी सब गोटे पर्टिकुलर टॉपिक लेवल आउट पर्टिकुलर लेवल को किछि लॉस हैला पर ही जाय तो सब बेले कम ही जीवो सेति पई सब बेले कोन ना ऑपरेट पिरामिड ऑफ एनर्जी सब बेले ऑपरेट सेति पई थाए however there are certain limitations of ecological pyramid such as it doesn't take into account of some same species belong to or more trophic level से लेखिला ecological pyramid एटा कंसीडर करे कि गोटे स्पेसीज
2 or more trophic level को भी belong कर पारे सी गोटा strictly गोटे trophic level को नहीं करे ecological pyramids गुड़ा it assumes a simple food chain एटा assume करे कोन simple food chain जोटा केबे हम something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids, even the place vital on ecosystem. So it लिखले कौन ना limitations of pyramids because limitations of ecological pyramids हमें लिखवा कौन ना first से food web को से consideration level आने किस कोटे species अलगा अलगा trophic level में रही परिवो और saprophytes मान को भी से जगह दिलाने decomposers मान को तो से जगह दिलाने decomposer मान भी बहुत important role play करते तो सेटा होची ecological pyramid कौन ना limitations ecological limitations कौन ना एवढा कौन तापर तुम माने एटा summary गुड़ा पढ़े summary गुड़ा का कितने कितने important ये देता है important definition by important line देता है और summary पूरा chapter को से short रे पूरा ये कर दिए short रे कौन करे तो ना ये कर दिए तुमती आगो nutrient cycling ଥିଲା ଏବେ nutrient cycling नहीं एठे हमें देखियो energy flow is unidirectional. Energy flow is when the first plants capture the solar energy and then food is transformed from producers to decomposers. Organisms of a different trophic level in nature are connected to each other by for food energy relationship forming food chain. The storage and movements of nutrient cycling हमें देख लेना nutrient cycling अब अच्छा रखेंगे अगर पुराना बड़े nutrient cycling थला इतना नहीं तर हमें देखिए कौन ना the storage and movement of nutrient elements so the various components of ecosystem is called nutrient cycling. तो nutrient cycling definition दे दीजिए the storage and movement of nutrient elements through various components of ecosystem is called nutrient cycling. Nutrients are repeatedly used through this process. Nutrient cycling is of two types. Nutrients is of two types. ଗୋଟେ ହଉଛି gaseous and sedimentary. Nutrient cycling ହଉଛି two type ଗୋଟେ ହଉଛି gaseous ଆଉ sedimentary. ଯେଟା gas ଆଉ sedimentary ମାନେ ଯେମାନେ ତଳେ ବସି ଯେମାନେ wet ଥାଏ. ତ gaseous ଆଉ sedimentary nutrient cycling ଏଟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର nutrient cycling. Atmosphere or hydrosphere is the reservoir for the gaseous type of cycle. Atmosphere and hydrosphere is the reservoir for gaseous type of cycle. In the carbon mainly carbon dioxide form में ही ଆମ environment ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଛି ଆମ biosphere ରେ carbon ର ସବୁଠୁ ये होची होची हमर atmosphere carbon ର reservoir होची ଆମ atmosphere. Whereas Earth's crust is the reservoir. Earth's crust is the reservoir for sedimentary type in the phosphorus. Gaseous type ପାଇଁ ହବ atmosphere ଟା ହବ gaseous type ପାଇଁ reservoir ଆଉ sedimentary ପାଇଁ ଆମର earth ର crust ଟା ହବ reservoir. Products of ecosystem processes are known as ecosystem service and the purification of air and water by forest. Products of ecosystem processes को ecosystem service कहते हैं the purification of air or water by forest. तो एटा तमे summary पढ़ दो भाई भी जे एटा हमर मेन टॉपिक रे नहीं मैंने एग्जाम रे आसी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से एग्जाम रे पछाड़ देव काहे तम समरी रे अछि बुक रे भी अछि filling the plants are called as producers because they fixed carbon dioxide producer कहते in an ecosystem dominated by trees the pyramid of number सब बड़े ecosystem dominated by tree अछि तने pyramid of number सब बड़े upright हबो in an aquatic environment the limiting factor for productivity is sunlight न था productivity से तो sunlight आराम से deep area को मिलेंगे sunlight common attributes in our ecosystems are earthworm like the common attributes in our ecosystem are earthworm and microbes bacteria. The major reservoir of carbon on the earth is atmosphere. Which one of the following has the largest population in a food chain? Producers obviously. Population decomposers भी है पर जैसे बैक्टीरिया का हालत है decomposers भी पर बट हमें यदि फूड चेन जेतु भी हमें डेट्रिस फूड चेन नाम पिरामिड देखियो ताने प्रोड्यूसर्स है सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल कोन हबो जू प्लैंकटन हबो पहले फाइटोप्लैंकटन तब जू प्लैंकटन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जदी हमरो ये माने पड़ले जदी हमरो herbivores मान को जदी जे खाए से हो secondary producers herbivores मान हे परिबे then one of the above. What is the percentage of photosynthetic production in the instead of 50% PR 50%? ताबरे एट द डिस्टिंग्विशन तो करि परिबो एवडा भी तम सड बुडा काम चैप्टर लेखा हिची सडा के भी तम डिस्कस करि परिबो तो आज हम चैप्टर कोन पड़ले आज हम चैप्टर पढ़ले इकोसिस्टम एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हो इकोसिस्टम तापर हम इकोसिस्टम और चैप्टर को कंपोनेंट विषय पढ़ले
प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टा समरी रे देछि एबे देइना सेटा आगुर थिला आगुर हमर चैप्टर थिला बट एबे नाही एबे चैप्टर को ओमिट कर देछि तो ए बळे आज इकोसिस्टम चैप्टर टा फिनिश होला